Hello everyone, I'm Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to look at the mathematical expression for the elasticity of substitution in case of CES utility function. So you have been given a general form of CES utility function. You have to derive an expression, a formula for the elasticity of substitution. Okay, so let's look for that. First, the concept of elasticity or substitution tells you like at what ease consumer can substitute between different goods. Substitute between different goods. So different goods. In our case, we have good X and good Y. Okay. So we can say at what ease consumer can substitute between good X and good Y with the change in MRS. Okay. This is the concept of ES, elasticity of substitution. I'm going to say it ES. Okay. So there's a formula for it. ES is the ratio of percentage change in the ratio of by x to the percentage change in MRS XY. That is margin rate of substitution for good X and good Y. Okay. MRS is the slope and जब इसको expand करके देखेंगे so you will get in this form. जब इसको expand करेंगे तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको इलास्टिसिटी के फॉर्मूलेज आते इस तरीके से होता है वो एक्स वाई ये सेम रहता है इसके जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी रहेगी मैथमेटिकल वन लॉग वाई वाई एक्स ये सेम ही है इसी इसी इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन लॉग फॉर्म एम आर एस एक्स वाई ये तीनों फॉर्मूले सेम है एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करके लिखा है ओके यहाँ पे हमारा मेन फोकस ये नहीं है कि किस तरीके से आते हैं मेन फोकस है सो लेट्स डू इट for this given CES production function. So we have been given a general form of CES utility function. Sorry, it is not a production function. CES utility function. These concepts are bit familiar to each other. Theory and producer theory. तो कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है मोस्टली इट्स लाइक अगर आपको कंज्यूमर थियोरी अच्छे से आ गया दैट मीन्स आपको प्रोड्यूसर थियोरी आपने ऑलरेडी कर लिया आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है शब्दों का बस बाकी सारी चीजें सेम है in this consumer theory and the producer theory. So you have been given this function x rho plus y rho 1 y rho. So first let me tell you where are the goods. Okay. Rho is the substitution parameter. Okay. ये आपको बता दे क्या आप सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड एक्स एंड वाई सब्स्टिट्यूशन in order to solve it substitution first we have to calculate MRS for this particular utility function. Okay, so your MRS is equals to this utility ratios, marginal utility ratios. So as we know, your MUX is the partial derivative of U with respect to X and you have been given a function. ये two form है. First like इसका डिफरेंशिएशन लाइक मैंने काफी बार बताया है इसको आप ऐसे देख सकते हो लाइक U इज इक्वल्स टू दिस एंटायर कंसीडर अभी ये x प्लस y इसको कंसीडर मत करो इसको एंटायर a कंसीडर करो a का पावर 1/p दिस रो ओके नाउ फर्स्ट सॉल्व इट with that respect so 1y रो क्या आ जाएगा and you left with a 1 y रो minus 1
ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम एक्स के ये ओवरऑल डिफरेंशिएशन हो गया ये पूरे टर्म का। अभी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये एज इट इज रहेगा, एक्स को बाहर ले लेते हैं। तो एक्स का जो पार्ट क्या है, रो है, तो रो आगे आ जाएगा एक्स रो -1, ये डिफरेंशिएशन। और ये आपका 1/रो ये एज इट इज रहेगा, 1/रो ए 1/रो -1, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करके इजी तरीके से। बाकी आपको जैसे इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। सो MUX लेना है तो फर्स्ट विल डिफरेंशिएट द एंटायर टर्म। सो 1/रो आगे आएगा बिकॉज दैट्स द पावर, एंड विल गेट, ये हमारा एज इट इज रहेगा। सो 1/रो -1, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ। अभी हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स का पावर क्या है, दिस रो, सो ये आगे आ जाएगा एक्स रो -1, दिस। ओके, नाउ फॉर MUX, MUY, del UY del Y, अगेन सेम, ये तो एज इट इज ही रहेगा, एक्स रो प्लस वाई रो 1/रो -1, देन नाउ विल रिस्पेक्ट विद y, रो y रो -1। आपको रोना नहीं है, बार बार मैं रो रो बोल रही हूँ तो इट इज वेरी इजी। ओके, सो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू कैंसिल आउट, सिमिलरली हियर। एंड हम लोगों को क्या चाहिए, MRS इज द रेस। ओके, सो वील डिवाइड दिस बोथ द टर्म अच्छे से। ओके, सो ये दोनों टर्म जो है सिमिलर हैं, क्या? ओके, MRS इज इक्वल्स टू एक्स रो x-1 डिवाइडेड बाई वाई रो y-1। इसको मैनिपुलेट करते हैं, y ऊपर जाएगा माइनस रो x माइनस रो इंटू वाई बाई एक्स, यू विल गेट दिस। सो इनको जोड़ के जब लिखेंगे तो यू विल गेट y 1 माइनस रो x 1 माइनस रो। ओके, एक साथ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y बाई एक्स 1 minus rho. Your MRS is equals to this. Okay. Now take log both sides. We'll get log MRS, पावर है ये, आगे आ जाएगा 1 minus rho log y by x. Okay. Now in order to convert this in terms of elasticity formula, differentiate log y by x with respect to log MRS. इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो यू फर्स्ट मैनिपुलेट इट इन दिस वे, तो ये दूसरी साइड भेजेंगे, डिनोमिनेटर में जाएगा 1 बाई 1 माइनस रो log MRS. Okay, now differentiate it, we'll get d log y by x equals to d log MRS, like we are differentiating it with respect to this, and we will left out with 1 by 1 minus rho. And as we know, this particular expression is equals to our elasticity of substitution ES. So this is equals to 1 minus rho. So we'll get the final expression for our elasticity of substitution. Okay. So if you know the value of rho, if you have been given a value of rho, then it is very easy for you to find out the elasticity of substitution for that particular utility function. Okay. This is the general expression in terms of rho for elasticity of substitution. Okay. This is, you can say this is the fourth formula to derive this particular expression, elasticity. Okay. This is एक तरीका है, ये second one, and this is the third one, and we got the fourth formula for ES, which is in terms of rho. So if you have the value for rho, you can easily calculate your ES, elasticity of substitution. Okay. So your CES utility function is the general type of utility function
That includes mostly all kind of utility function. That is your linear one, Leontief one, as well as the Cobb-Douglas utility function. So that's why you might have heard of this, that Cobb-Douglas utility function is an special case of CES utility function. Okay, how come it is possible? Because if you put rho is equals to 0, you will get ES equals to 1. एंड इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन डिराइव भी किया था बेस्ड ऑन कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन, जहाँ पे हम लोगों ने जब इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया था वी गॉट आर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1. So when you put rho is equal to 0, you will get your ES equal to 1, and this is the case of Cobb-Douglas utility function. And अगर आप rho का वैल्यू 1 रखते हो, then you will get ES is equals to 1 by 1 minus 1. ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल आउट, and this term 1 by 0, you will get infinite. So elasticity in this case will be infinite. So this is the case of linear utility function where goods are perfect substitute to each other. That is, good x and good y are perfect substitute if you got elasticity is equals to infinite. Okay, but if you put rho is equals to infinite, in that case you will get ES is equals to 1 minus infinite. तो अब infinite से किसी में भी divide करते हो, you will get 0. So in this case, elasticity of substitution is 0. So this is the case of perfect complements. That your good x and good y are perfect complements to each other. In this case, you will get linear utility function, and here you will get Leontief utility function or fixed proportion utility function, where both the goods are used in a fixed proportion. Okay. So we can conclude that all these type of function are a part of the CES utility function, and CES utility function is a in general form of utility function that includes all such type of utility functions. So in case of CES utility function, why it is called CES? Because of constant elasticity of substitution. The name itself suggests that the elasticity in case of this CES utility function will remain constant, means it will be a number. So it will vary from 0 to infinite. It can be 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. So elasticity, this ES remains constant. Constant का मतलब एक number आएगा आपके पास. Constant elasticity of substitution. CES, utility function. So your elasticity of substitution, ES, will remain constant in this particular case. Okay. So we are done with this. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share, and subscribe our channel. If you had any queries or if you had any suggestions, please do let us know. Okay, and you can also join us on our Telegram channel where we provide the PDFs of these YouTube videos, and we'll also upload important PDFs content with respect to economics. Okay, thank you.